Hello, good evening, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup, and finally the initial round, the league stages are over, and the last game has just concluded with India scoring yet another victory. They are unstoppable. The longest winning streak for India. Just fantastic work from them. इसके बारे में बात करेंगे, but first let me bring into the conversation four of my very great friends, panelists, outstanding cricketing minds, four former captains of Pakistan, four gentlemen who've served the game of cricket and Pakistan really well. First up, a great runner between the wickets, a great player of spin bowling, and also captain Pakistan, a great fielder, not to forget. Shoaib Malik, good evening, assalamu alaikum. Good evening, walaikum salam. Good evening, assalamu alaikum everyone. Mr. Dependable, one of the most successful test captains of Pakistan test cricket history. I've got Misbah. Good evening, assalamu alaikum, Misbah. Ji, good evening, walaikum assalam and assalamu alaikum to everyone. Next up, the man of crisis, another great runner between the wickets, kept wickets for Pakistan and captain Pakistan. We've got the silver fox of the Pavilion, Moin Khan. Good evening, assalamu alaikum. Good evening, Wasim Akram. Assalamu alaikum. And finally, ladies and gentlemen, the undefeated heavyweight champion of the Pavilion, the boxer par excellence, the rapper beyond any rapper's dream, the actor, the superstar, the cricket royalty himself. I've got the Sultan of Swing, the king of all-rounders, the one and only Wasim Akram. Good evening, assalamu alaikum, Wasim. Good evening, Fakhar. Assalamu alaikum, everyone. जी, I hope सब ठीक ठाक हों. बहुत शुक्रिया introduction का इतना लंबा. Well, actually, I try to kind of bring everybody together. It takes everybody some time to warm up and, get going. Sure. Interestingly, Wasim, earlier today, I was in the hotel in the gym and I met Kamran Akmal, who walked up to me and he said to me कि मैंने आपको ये पैगाम देना है. He thinks that you're an outstanding rapper. He says कि जो वसीम ने रैप कर दिया है उसका कोई मुकाबला नहीं है. आपने उनको जाके बोलना है इस बात को ऊपर कि वसीम भाई आप सुपरस्टार हैं. ये एक्चुअली उनके अल्फाज से सारे के. थैंक यू कामरान. अगर आप कभी अच्छी तरह बात करेंगे तो शायद आपके बेटी की सालगिरह पे आके रैप करूं मैं. That's awesome. बुकिंग खुली है. बुकिंग खुली है. बुकिंग खुली है. प्लीज उसके लिए मोइन से कांटेक्ट कीजिएगा. जी बिल्कुल. आइए जरा मैच समरी के ऊपर नजर डाल रहे हैं. आज का मुकाबला इंडिया मुकाबला नेदरलैंड्स था. दिस वाज द लास्ट गेम ऑफ दिस फर्स्ट स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट. अब इसके बाद नॉकआउट 3 मैचेस रह गए, 2 सेमीफाइनल और फाइनल. इंडिया विनिंग द टॉस, सिलेक्टिंग टू बैट और बस थोड़े से ही रन बनाए. 410 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे. अय्यर देयर पिकिंग अप अ ग्रेट सेंचुरी. KL Rahul also now that fantastic century that he scored today. Rohit Sharma, of course, hitman right on top, again a half century. Shubman Gill, again a half century. I mean, it's just incredible the way India is batting. In fact, Virat Kohli also with 51 runs today. So it's just unbelievable what they've been doing, this Indian batting side. The Netherlands bowling, I don't think they're going to like to remember that bowling card they'd like to forget that one. Netherlands in response, 250 all out. There was a good 54 there that we got from Nida Manoro, and then we had Engelbrock with 45, Ackerman 35, and O'Dowd there with 30 runs. And Siraj, of course, picking up 2 wickets, Bumrah 2 wickets, and everybody bowled from the Indian side. They had a great time today. They were enjoying their cricket and today. They should. They should. They won 9 out of 9. Second time it happened in the World Cup. First time India did it in 2003. Yeah. Although they lost the final, unluckily, but what a performance. It has been. And first time in the history of the World Cup, जब से World Cup हो रहे हैं, first time in top 5 batters got 50 as well. Yeah. और उसमें 2 ने 100 भी किए और क्या जबरदस्त 100 किए उन्होंने. मतलब अब यानी कोई वाली बात है कि इनको वर्ल्ड कप पकड़ा देते हैं, 3 मैचेस बच जाएंगे साढ़े सारे. Yeah, the way they're going, they're unstoppable, man. Yeah. Let's take a look at the points table. उसका जरूरत नहीं है, but still let's look at the points table. And here's your ICC Men's 2023 World Cup points table. It's India, which look at that winning streak. 9 games, 9 wins, unstoppable. Qualified for the semis, they were the first ones. South Africa followed them. Australia at number 3, New Zealand the last team to qualify for the semi-finals. Pakistan sits at the 5th position, Afghanistan 6th, England at the 7th position, Bangladesh at the 8th, Sri Lanka 9th, and Netherlands right at the bottom of this table. But that's how your points table is looking like this evening. Wasim, incredible batting by India once again.
Yeah, 104 and 10 for 4 in 50 overs, 61 by Rohit Sharma, Gill 51 of 32. They scored 91 in first 10 overs. Game was over then. Yeah. I mean, the way they played again, Rohit Sharma 61 of 54, 8 चौके 2 छक्के. मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है. ठीक है, we talk about Emperor Kohli, we talk about Joe Root, we talk about Williamson, we talk about Babar Azam, but this guy is different. Yeah. Because it makes look batting so easy. You know, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बॉलिंग अटैक हो, बड़े आराम से शॉट मारता है. ये ऐसा बैटर है कि 5 बॉलर्स होते हैं ना ऑपोजिशन में, तो 5 को पीटता है. जो बाकी वसीम भाई ने नाम लिए हैं ना, वो 5 को नहीं मारते, वो 3 को मारते हैं, फिर 6, 7वें को मारते हैं. ये 5 को मारता है. ये ऐसा इसलिए गेम का वो क्या कहते हैं हम पंजाब में, टेम्पो ही चेंज कर देते हैं आते ही. हाँ जी, टेम्पो वो बॉलरों को या ऑपोजिशन को परथू अपने पड़ जाते हैं. वो हम लोग स्कूल जाते थे ना, तो अरबी के जब टीचर आते थे तो असी सीधे हो जाते थे. ये वो वाला हिसाब है. ये जब सेट हो जाए ना तो फिर ऐसे लगता है अरबी का टीचर आ गया. हमारा मैथ का होता था. मेरा भी मैथ का ही होता सर लाल दी. एंड देन शुभमन गिल, हमें लगा कि उनकी बड़ी फ्लैट परफॉर्मेंस रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो अचानक शुभमन गिल भी पाने शुरू हो गए. डेंगी से वापस है यार. या इतनी They were on a परफॉर्मेंस. mission right from the first ball. They were on a mission और शायद वो ये सोच के आए थे कि आज हाईएस्ट रन्स करने हैं हमने, क्योंकि ऐसे लग ही नहीं रहा था. वो एक बॉल नहीं रोक रहे थे. हर फास्ट बॉलर को निकल के हर बॉल पे ट्राई कर रहे थे शॉट. और कहीं पे भी नहीं कि सोचती है ना टीमें कि चलें हम थोड़ा टाइम ले लें, अपोजिशन ऐसी है, रन्स कर लें. बट द वे दे बैटेड, आई मीन लुक एट दैट, 5.5 overs, 50 ऑलरेडी ऑन द बोर्ड. हर कोई बॉल, चाहे पीछे है, गुड लेंथ पे बॉल है, आगे किया तो सामने उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ये पिकअप शॉट खेला है. आई मीन ऑल शॉट्स लाइक, एक तो आपको ऐसा नहीं नज़र आता कि जैसे आप स्लॉगिंग कर रहे हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स. और पूरा जो हम कहते हैं कि शेप आपकी ना ख़राब हो खेलते हुए शॉट, चाहे वो सामने फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, बैक फुट पे. सो दैट इज़ द ब्यूटी. This talent should be got to be natural. ये हाई एंड कोऑर्डिनेशन. वो कहते हैं ना, हम क्रिकेट में बात करते हैं कि इसके पास टाइम बड़ा है. यूजली ऐसा नहीं मतलब कि कोई घड़ियां की दुकान है. उसका मतलब है कि वो लगता हमें ये है कि इसको बॉल स्लो आ रहा है. क्या मिट्टी दे You guys too tired? Are you laughing just for random stuff? No, we're not too tired. बड़ी अच्छी बात में आप लेके रहे हैं, मतलब नहीं कि घड़ियां की दुकान है यार. आपने एग्जांपल बड़ी जबरदस्त दी. मेरे को टाइम है, इसका मतलब है नहीं घड़ियां की दुकान. No, I meant was when we talk about time है, उसका मतलब है कि फास्ट बॉलर का जो इंतजाम था, इंतजाम के पास भी बहुत टाइम था. फास्ट बॉलर को लगता ही नहीं था कि उसे प्रॉब्लम हो रही है. लेंथ आगे है तो आगे, बैक है तो बैक, एंड सेम गोज पर रोहित शर्मा. एक चीज़ ज़रूर है वसीम भाई, हमारे पास भी ऐसे आते हैं, बट वो जब 2-3 इनिंग से ऊपर नीचे वो फेल होते हैं ना, फेलियर आता है, तो हमारे कुछ कोचेस और कुछ हमारे पेरेंट्स भी जो ना अपने बच्चे को ये बोलने में मजबूर कर देते हैं, नहीं भाई उसकी जो नेचुरल वे है ना उससे उसको हटाते हैं. ये नहीं करना है प्लीज. कोई अगर ऐसा बंदा है तो उसको उसी में खेलने दें. नेचुरल. जैसे हम अपने बच्चों को जो है बता देते हैं कि यार ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, भाई इट्स अप टू देम. लेकिन मलिक ये जो डिफरेंस जो हमारे जैसे आप स्लॉग कर रहे हैं या अगर खामखा की शॉट मार रहे हैं, एक आप टेक्निकली देखें उसको कि उसकी पोजीशन कैसी होती है खेलते हुए हर शॉट. वो जो टेक्निक की हम बात करते हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, स्टेबल होता है. इसीलिए हमें जो बैट्समैन जब बॉल होते वक्त स्टेबल हो जाता है, अपनी मूवमेंट्स उसकी कंप्लीट हो जाती हैं एंड ही इज़ रेडी टू रिएक्ट टू द बॉल, वो फिर हमेशा लगेगा कि यार इसको स्लो मोशन में गेंद हो रहा है. लेकिन अगर बैट्समैन ऑन द मूव है, जब बॉल डिलीवर हो रही है, तो वो जब कंप्लीट करेगा अपनी फीट मूवमेंट और बाद में हाथ चलेंगे, लगेगा कि यार इसके पास टाइम कम है. बच्चों को इतनी टेक्निकल चीजों में नहीं डालना चाहिए, उनको उनके टैलेंट पे सीखने देना चाहिए. somebody comes to me कि जी मेरा 10 साल का बच्चा, उसको कोचिंग करा दें या कहीं बता दें, तो मैं उन्हें यही कहता हूँ 10-12 they just play cricket.
Let them enjoy. play. थोड़ा बड़ा होने दो 14-15 by the time you know talent है नहीं है. वसीम भाई उस टाइम पे जो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आप बता नहीं सकते कि ऐसे फील्ड नहीं वो ड्रिल्स हैं, डिफरेंट शॉट्स हैं ऐसी कि आप उनको बताते हैं कि ऐसे वो खुद ब खुद डेवलप हो जाता है रेपिटेशन से. All right, with that we're going to take a break on the Pavilion. When we come back, there's more on the other side. Stay with us, please. Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and Sports and the Airwise app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup, and the news is that India have won yet another game, and well, now they are going to clash with New Zealand on the 15th, and that's the first semi-final that we're going to be bringing you live here on A Sports and 10 Sports. हम लोग बात कर रहे थे आज इंडिया की इनिंग्स की 410 for the loss of 4 wickets. Two very good centuries there today, Wasim. मेरा प्लेयर टॉप कर गया ना आज मैं. अच्छा, राहुल आपने कहा था ना. मैंने राहुल तुम शोएब मलिक ने बोला आयर किसी ने बोला था. नहीं, मैंने रोहित आयर बोला था ना यार. आपने रोहित बोला था. मैंने रोहित आयर यार ये चेक करो सर. मेरे पास लिखा हुआ है ज्यादा. रोहित आयर बोला था ना मैंने. चलो जी, कप मिसबा में दे देंगे. हाँ जी. आपने ब्रेक में नहीं देखा, मुझे बताने दें. मिसबा ने खाना नहीं खाया ना इन लड़कों ने, क्योंकि मैच जल्दी हो गया. हमने शो शुरू कर दिया, वो एने बिस्कुट लेके आया. ऐसे लगे जैसे मीनारे पाकिस्तान पिकनिक पे आए हुए हैं. बिस्कुट निकले हुए ने, चाय डिब्बों के खा रहे ने सारे. ये यकीन करें, हमसे पूछ लेते ना तुम्हारे यहाँ तक अभी तक फंसे हुए थे. आई टोल्ड यू कि कमेंट्री में कहा गया था हमें शुरू में कि कभी कमेंट्री के दौरान वालियों ने डोंट हैव अ बिस्किट. So I thought, why? You know, no, me being me, मैं कहा यार ट्राई तो करने में मैं बिस्कुट ना खाना. वो खा लिया मैंने. अब भाई यार ऐसे फंसे है, हल्के फंसे हुए है. You know, get stuck somewhere that you can't take it out. अब मैं कमेंट्री भी कर रहा हूँ, उंगली मार रहा हूँ अंदर के यार. तुम लोग फंसे में तो नहीं बिस्किट पाए 10 दिन में नूर ऐसे कर ले. मैंने चाय पी के निकाल लिया. मिसबा ने चाय पी के नहीं, निकाली. उन्होंने कुल्ली नहीं की, चाय में डुबोया सीधा ये हलक में. Yeah, he was hungry. He could. Iyer batted really well. Oh, he आपके did. स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं. What a fantastic innings by him, and he was looking for a big score, and I think that would do him a lot of good before going into the semi-final. और उसके साथ इंडिया ने उसको रखा है. और हालांकि फाइनल में या एशिया कप किसी बड़ी मैच से पहले, just before the game, he had a back spasm. He got injured. Yeah. And then Ishan Kishan came in against Pakistan, if you remember. G. He got runs as well there. But I mean, 10 sixes and 5 sixes and 10 fours. Yeah. In his innings. Looked in control. Drive the nine. Look at this was the shot of the match for definitely. Extra cover जो छक्का मारा इसने खड़े. Beautiful. बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है. बल्ला इसका भी मिसबा हवा में ही होता है. Ready to go. Ready to launch. जबरदस्त किस्म की स्विंग है, स्पेशली जब जो ग्रिप है ऊपर से जितने भी जैसे अब्दुल रज़ाक खेलते होते थे ऐसे ही पकड़ के, तो वो एक तो लॉन्ग लीवर आपका लॉन्ग हो जाता है और उससे आपको और ज़्यादा जो है पावर मिलती है, शॉट पावर. एंड फॉर केएल राहुल, शोएब 64 गेंदों पे आज उन्होंने 102 किए जो है उनको इसीलिए जो शरियास अयर हैं उनके बाद रखा हुआ है कि अगर 2-3 विकेटें जल्दी आउट हो गई तो ये एक ऐसे हैं कि हर टाइप का खेल लेते हैं. मैच को फिनिश करना हो, इम्प्रोवाइज करना हो, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना हो, और वो आज देख भी सकते हैं. स्पिनर को भी बहुत अच्छा खेलते हैं, पेसर को बहुत अच्छा खेलते हैं, गैप्स में बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं. देखते हैं कि कहाँ के फील्डर्स ऊपर हैं, और आज भी देखें जो उन्होंने शॉट्स खेले वो वहीं खेले जैसे ये शॉट खेला. पिकअप शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं, और ये बैकफुट पॉइंट पे ये गैप्स में खेलते हैं, और इसीलिए इनको एज अ फिनिशर भी उन्होंने अपनी टीम में रखा हुआ है कि अगर कुछ आउट हो जाएं लोग तो ये नीचे से जाके संभाल सकें. ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी फर्स्ट मैच में जब जल्दी आउट हो गए थे, ही वाज द वन हु फिनिश्ड द गेम. सबसे अच्छी चीज़ है जो फील्ड को खेलना उनको आता है. जैसे भी बीच एक शॉट मारा उन्होंने, आगे यॉर्कर टाइप बॉल था, उसको पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री गई है. तो मतलब आप ऐसे प्लेयर को बॉलिंग करना बहुत ही मुश्किल है बॉलर के लिए. जहाँ से फील्डर ऊपर आता है वो एग्जैक्टली वहाँ पे शॉट खेल सकते. फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, अगर मैक्सवेल फॉर इंस्टेंस, व्हाट अ प्लेयर ही इज, एज अ बॉलर मुझे पता है कि मुझे मार पड़ सकती है, आई हैव अ चांस कि मुझे चांस देगा ये. बट प्लेयर लाइक हिम, केएल राहुल इज अ प्रॉपर टेक्निकली
right batter. He opened in Test cricket, he opens in ODI cricket, T20 में भी open किया है, and then he's changed his इसका role बदला, उसको बताया कि ये तुम्हारा role हम जैसे शोएब बता रहे हैं. अगर दुनिया की बेस्ट टीम्स यहाँ पे compete कर रही हैं, अगर कंपैरिजन किया जाए दुनिया के जो 5 नंबर पे खेलते हैं आके, क्लासन जो है वो ठीक है, उनको अगर बेस मिले तो वो फिर आपको जो है मारते हैं. ऐसे दूसरी टीम्स में, ऑस्ट्रेलिया में या कहीं पे भी आप देख लें, अगर कंपैरिजन करना है, सो इंडिया हैज द बेस्ट बैटर हु कैन प्ले इन एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन. आज विराट कोहली ने भी निस सेंचुरी की है. मोइन बड़े डिसअपॉइंटेड होंगे कि ही मस्ट हैव मिस्ड आउट ऑन अ सेंचुरी. आई थिंक ही इज द ओनली वन जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन जिन्होंने भी रन्स किया आज, उनका जो स्ट्राइक रेट था वो इतना अच्छा नहीं रहा. बट नो डाउट इट वाज अ गुड इनिंग. एक रिकॉर्ड भी हुआ है आज ये कि ऊपर के टॉप प्लेयर्स ने 5 रन बनाए. किंग कोहली की तो क्या बात है. किंग कोहली हर तरफ, हर वक्त, जब दिल चाहता है, जहाँ दिल चाहता है वो शॉट खेल देते हैं. आई थिंक इज नो डाउट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. जरूर मैं ये पर्टिकुलर विकेट आई डाउट फॉर इट वाज फॉर नेदरलैंड के फास्ट बॉलर्स के लिए पिच थी. व्हाट अ पिच इट वाज टू बैट ऑन, एंड दे टुक फुल एडवांटेज ऑफ इट. एक ही चीज़ रह गई थी वसीम भाई इंडिया ने जो पूरे वर्ल्ड कप में नहीं की थी, 400 नहीं बनाए थे, आज बना दिया. एवरी बॉक्स काइंड ऑफ टिक. लास्ट 10 ओवर्स खेले, लास्ट 10 ओवर्स भी 12.6 के एवरेज से खेले. that is also but talking about that Vander Merwe ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की. सबसे इकोनॉमिकल बॉलर थे आज वो नेदरलैंड्स के लिए वसीम. अदरवाइज सबको तो बड़ी ख्याल है थोड़ा एहतराम किया उनका एहतराम किया. इसमें इस टोटल के बाद 410 के बाद जब 4 विकेटें हों, वैंडर मर्व को ये कह सकते हैं कि अंधों में काना राजा था. अंधों में काना राजा. I mean 10 ओवरों में 53 रन दिए. ये एडवांटेज था, एक्सपीरियंस बढ़ा है उनको. अच्छी बॉलिंग भी की है. दूसरा राइट हैंडर्स थे और जिस टाइम पे वो बॉलिंग कर रहे थे उस टाइम पे दूसरी तरफ से क्योंकि रन आ रहे थे तो ऑल आउट बैटर उन पे चांस नहीं. तो बॉलिंग अच्छी हो रही थी तो वो चांस नहीं ले रहे थे कि उसको बिल्कुल बड़े शॉट्स के लिए जाए. तो ये उनको थोड़ा सा एडवांटेज हुआ है. देखें एक्सपीरियंस तो है, और जिस तरह स्लो बॉल पूरा वो उन्होंने यहाँ पे जितने भी बॉलर आए हैं, सेंडर स्पेशली, उनकी बॉलिंग देखी होगी तो एयर दे रहे हैं, वेरी कर रहे हैं बिल्कुल. इस पिच पे आज सुबह भी वो पिच रिपोर्ट में भी हमें बता रहे थे कि इस पिच पे अगर आप थोड़ा फ्लाइट दें गेंद को तो यू कैन गेट सम टर्न. एंड या यू कैन, बट इतना हुआ नहीं. इन गेम इज नॉट अ बिग टर्न ऑफ द बॉल, नेचुरल नहीं है वो टर्न. बट जो लेंथ वाज वेरी गुड. इससे एक चीज़ देखें कितनी क्लियर है कि पैनिक ना आप करें तो भी आप 400 बना सकते हैं. अगर कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, थ्रेटनिंग है फॉर दैट गिवन डे, गिव हिम रिस्पेक्ट एंड हैव दैट faith as a batter के आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं. Teja was the pick of the batters for Netherlands today. आज उन्होंने सेंचुरी जो है वो गाड़ी है and played well, looked good, and of course वही वाली बात है कि वो जिस सूरत हाल में थे तो वो बस यही था उनके लिए करने के लिए कि पाया आज हाल प्लेयर दी गल करनी है. नहीं हाल प्लेयर दी नहीं, मैं क्या एक नेदरलैंड्स से भी प्लेयर दी गल कर ली है जी भाई. इन्होंने रन्स किए हैं जब भी ये खेले हैं. शुरू में मैचेस गंदे इनके गए हैं, उसके बाद इनको 1-2 मैच रेस्ट कराया, फिर ये वापस आए तो इन्होंने रन्स किए. और मिडिल ऑर्डर में 2 ही प्लेयर हैं इनके, एक साइब्रन एंगलब्रेक्ट, उन्होंने रन्स किए और दूसरा इन्होंने रन्स किए हैं. जिन्होंने थोड़ा सा हम जब बात करते थे कि 4 के बाद इनकी बैटिंग शुरू होती है जी. आज भी ऐसे हुआ, 5 आउट हो गए, देन दे हैड अ पार्टनरशिप. तो फाइट करते हैं ये टेल एंड. लेकिन वही बात है कि 250, 260, 270 रेंज है इनकी. इससे ज़्यादा अभी वो आगे नहीं जा सकते. They should maybe look at the Afghanistan template, because अफगानिस्तान को भी यही प्रॉब्लम होती थी and they've really changed that situation for themselves. देखिए बात यह है अफगानिस्तान के पास जो लग्जरी है उनकी बॉलिंग है, उनके पास ये एक्स फैक्टर उनकी बॉलिंग का. वो 260 या 250 क्रॉस करते हैं तो एकदम दूसरी टीम पे प्रेशर पड़ता है मेंटली. वो जो उनको पता होता है कि यार अब इनकी बॉलिंग को इतने रन्स करने हैं चाहे पिच जैसी भी हो. इनकी बॉलिंग अभी वैसी नहीं है कि अच्छे बैटिंग पिच पे ये किसी टीम को उस तरीके से मुश्किल में डाल सके. Alright folks, with that we're going to take a break here on the Pavilion, but when we come back there's more on the other side.
Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY Zap app and our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. India have won their last game in the group stages, and now we are into the finals, semi-finals. First up. All right, so let's talk about what's the way forward for India to go into the semi-finals, Wasim. पकड़े गए आज कि इंडिया ते 9 मैच जीती है सेमीफाइनल में उनका वे एंड मैच भी तारू तंग करे भाई नेदरलैंड्स से ही आओ व्हाट इज द रियल क्वेश्चन सेम नेदरलैंड्स way forward for Netherlands. Now they should be proud of themselves. They did really well in this World Cup considering कितनी कम उनको international cricket मिलती है. They qualified for this World Cup. They won that thing in Zimbabwe just before the World Cup जो qualifier हुए थे. बस I think international community, cricket community ने इनको help करनी है. Boards ने to have play more cricket against these guys. Then they'll be able to compete against the best sides in world cricket. So well done, Netherlands. Well done, congratulations, and that's the way forward for Netherlands. And with that, we're going to take a break. But when we come back, it's your favorite part of the show. It's hashtag Ask the Pavilion. Start sending us those texts, those messages on socials, and we'll be talking about them after the break. See you on the other side. Welcome back to the Pavilion. आप देख रहे हैं sports. I'm sorry, I was chewing on something. Biscuit नहीं है. I was having dry fruits. Let me redo that again. Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and the ARY Zap app. And it's time for your favorite segment, hashtag Ask the Pavilion. एक दफा इनको खाना नहीं मिला. एक दफा लेट हो गए हैं. एंजिन ने दीदे हुए इन्हें नहीं पाए ना. The sugar level down होने शुरू हो गए हैं. Okay. You should understand. You know how that works, right? Yeah, that's why I ate at 7:30. All right, जनाब. Let's start off. पहला सवाल हसन अक्की आपका सवाल है. Fakhar bhai, please take my question and name and show. Akil Hassan from Delaware, USA. My dear legends, do you recall the distance of the longest six you hit in your careers and the stadium where it happened? All of you, please share. So this is from A. Hassan or Hassan Aki. Go ahead, Wasim. यार छिक्के तो हसन बड़े मारे मैंने. I'm kidding. मुझे एक स्ट्रेट वे मेरे ज़हन में एक आता है. मोइन कप्तान था. आई थिंक मैंने 30-35 सिर्फ स्कोर किया था और मैंने 12 था. शर्वाइन क्या नाम था उसका जो बैट्समैन था? चंद्रपॉल नहीं, कैम्बल. हाँ, कोई कैम्बल नहीं था. फर्स्ट नाम शर्वन, राइट हैंड, वेरी गुड प्लेयर. उसने 100 भी किया था हमारे खिलाफ. कैम्बल तो राइट हैंड, ये भी राइट हैंड था. लंबा फ्रंट फुट पे आता था, बट ज्ञाना का था ये. इसको लेग ब्रेक करता था एंटीगा में. मैंने इसको मारा था, निकला, उसने पीछे किया, मैंने मिड विकेट मारा. स्टेडियम के बाहर पीछे एक बरगद दा दरख्त सी पाइन उधर पार गया सी. दैट वाज द बिगेस्ट. तब हमारे पास ये हॉकाई वगैरह नहीं थी डिस्टेंस नापने का. आजकल के बल्ले होते हैं ना जैसे आजकल हैं. हाँ. और आपने तब ये वाली शॉट मारी होती. Yeah, I would have been. Oh, it would have just gone. Yeah. But what's yours, Misbah? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वॉन्डरर्स में. वॉन्डरर्स से गो बॉल फ्लाई एनीवे है ना. वर्ल्ड कप. ओके. 109 मीटर था, 111. मिड विकेट नहीं, सामने लॉन्ग ऑन. ओके. Yes, for you, Shoaib. मैं नॉटिंगम में ड्यूरिंग 99 वर्ल्ड कप ऑन एलन डोनाल्ड को. वो तो खैर कोई नहीं. स्क्वायर लेग फाइन लेग की तरफ खेला था. चीज मारती थी ना अपने एलन डोनाल्ड. बिल्कुल. उस मीटर्स का नहीं पता कितने मीटर्स है, बट वो ग्राउंड के बाहर एक बिल्डिंग थी. बिल्कुल बाउंड्री के बाहर एक बिल्डिंग थी. वो भी है बिल्डिंग. जी हाँ. उसके सेकंड फ्लोर पे बॉल लग के वापस ग्राउंड में आ गया. वाओ. बिहाइंड द स्कोर कार्ड. ग्रेट मेमोरी. शोएब, दुबई स्टेडियम में मारे हुए हैं कोई 105 के ऊपर थोड़े से छक्के. 105 मीटर के ऊपर थोड़े से छक्के. बहुत मेहरबानी आपकी. इनके भाई 397 छक्के T20. आई नो मैन, अमेजिंग. यस, वेल डन. अच्छा जी, महविश_B आपका एक्स हैंडल है. महविश भी आपका एक्स हैंडल है और एक्स पे नाम भी यही है. ग्रेट शो. क्वेश्चन टू ऑल, स्पेशली फॉर यू वसीम अकरम. व्हाट्स द रोल ऑफ टीम मैनेजर इन इंटरनेशनल क्रिकेट? No disrespect to Rehanul Haq, but why not appoint an ex-professional cricketer or at least someone who's passionate about cricket instead of football? Instead of football, meaning what? Is Rehan passionate about football? Is that what they're implying? हाँ, वो जो नीचे वीडियो भी है ना. Okay, okay, fair enough. Go ahead. His favorite sport is soccer. Okay. So ये सिर्फ उनका मतलब है और कोई
नहीं, क्रिकेट में मैनेजर का काम कोच का होता है, वो काम जो फुटबॉल में मैनेजर करता, आई सपोज मैनेजर का काम होता है वो क्रिकेट में कोच का होता है। जैसे हमारा क्रिकेट डायरेक्टर टीम के साथ है, फिर कोच है। मैनेजर का काम होता है लॉजिस्टिक्स का ऑर्गेनाइज करना, डेलीज, लड़कों को प्रॉब्लम ना हो, किसी डॉक्टर ने जाना है, किसी ने अपॉइंटमेंट लेनी है, किसी का MRI होना है, एंड ट्रैवल नेक्स्ट डे ट्रैवलिंग क्या है। सो इट्स अ बिट ऑफ इट्स नॉट एन ईजी जॉब दो। It is not. It is by no means what. So I hope, Mavish, you got your answer. I'm just scanning through, and I don't want. My question is with Wasim Akram, sir. What all precautions Indian team should take before going to semi-final on the 15th with New Zealand? Which two teams you look for the finals? Also, the Pavilion is one of the best cricket shows. I watched this for the last 2 years. Thank you, credit. Professor Dr. Ved Prakash. डॉक्टर प्रकाश, गुड इवनिंग, आई होप सब ठीक ठाक है। इंडिया को क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? दे ओनली कैन प्ले द वे दे आर प्लेइंग फेयरलेस क्रिकेट, गो विद इट, हैव फन लाइक दे आर डूइंग, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। द होल कंट्री इज फॉलोइंग देम, एवरी गेम इज पैक्ड, एवरी स्टेडियम इज फुल, एवरी रोड इज पैक्ड सपोर्टिंग देम। सो दे शुड एंड दे मस्ट बी लविंग इट एज वेल, द अटेंशन दे आर गेटिंग राइट नाउ, एंड राइटली सो। Yep, you are not bothering with any questions today, Shoaib. All the load is on me today. Okay. मिस्टर प्रकाश, एक और चीज़ है, ऐसी चीज़ जब हर चीज़ फेवर में आ रही हो तो नज़र उतार लेनी चाहिए। Okay. Yeah. That's true. That is true. All right, Janab. Ghazi Khan, Moin and Wasim franchise have performed bad. Shoaib has had worse captaincy while Misbah coaching didn't do well. What's the reason, as they have great minds? Ghazi Khan, helping आपका X handle है, guys. ग्रेट माइंड्स की बात नहीं होती, इट्स अ टीम गेम। टीम के अंदर हर प्लेयर की जब तक आपकी इंटेंशंस ये नहीं होगी कि मैंने कुछ करना है अपनी टीम के लिए, बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी एक के लिए, चाहे वो कोच हो या कैप्टन हो। इवन बहुत सारी टीमें हमने वर्ल्ड कप में देखी हैं कि कैप्टन से परफॉर्म नहीं हो तो उनकी टीम भी बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर सकी। आई थिंक ये इट्स अ टीम गेम, और इसमें सबकी जो इम्पोर्टेंस है, वो जो इंटेंशंस है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आपके अल्टीमेट जो उस पर्टिकुलर इवेंट जो आप खेल रहे हो उसमें आपका गोल है उसको जीतने का कि नहीं, उसके मुताबिक आपने प्रिपरेशंस की हैं, सबने नहीं किए। तो आई थिंक इट्स अ टीम गेम। अगेन इट कम्स विद एवरीवन, लाइक सबकी इंटेंशन। और मोइन फ्रेंचाइजी क्रिकेट बताओ डिफरेंट होती है, उसमें ओनर्स का भी ओनर्स का बिल्कुल। Yes, there are a lot of angles to it that people do not understand. दूसरा कोचिंग का सवाल हुआ है, तो कोचिंग देखिए, बात यह है कि आप अगर सिर्फ विक्ट्रीज को देखते हुए कोचिंग को समझते हैं ना कि कोचिंग विक्ट्रीज से रिलेटेड है, किसी टीम की जब आप कोचिंग कर रहे हैं, डेवलप प्लेयर्स, डेवलप रिसोर्सेज, ठीक है जीतना भी है, लेकिन आपने वो भी देखना है कि हाँ जी आपने कितने प्लेयर इंट्रोड्यूस कराए हैं, कितने प्लेयरों को फ्यूचर के लिए आपने बनाया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए आगे चलते हुए, चाहे आप नीचे डोमेस्टिक लेवल पे कोचिंग कर रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे। Right. I have to I forgot, मैंने लिखा हुआ था सुबह, इस उम्र में चीज़ें भूल जाती हैं, कि मैंने आपको उनका मैसेज पढ़ाया था सुबह। वन ऑफ माई हीरोज़ जिनको देख के मैंने क्रिकेट शुरू की, खेली एज ए यंग किड, उस ज़माने में दुनिया में 4 ऑलराउंडर होते थे जिनका राज था। सर रिचर्ड हेडली, सर इयन बोथम, एक ग्रेट इमरान खान, एंड अनबिलीवेबल कपिल देव। Wow. ग्रेट मैन। ही कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग, मैसेज आया था उनका कि वसीम बड़े अरसे से आपसे बात नहीं हुई, मैं आपका शो देखता हूँ, गुड टू हेयर यू गाइज, एंड ही सेड हेलो टू एवरीवन। और मेरी तरफ से पूरे पवेलियन, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको कपिल भाई दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। Pause for a second. I think because we have so many viewers across the world that are watching us and have been sending us messages, and वो आप सबको हम सब की तरफ से a very very happy Diwali to all of you who are celebrating around the world. Wishing you a very very happy Diwali and all the prosperity and blessings. Thank you. Okay, I have a question. इनका नाम है उज़ैर मुगल और आस्क द पवेलियन। क्वेश्चन सबके लिए। नीदरलैंड्स has Dilade, South Africa has Janssen, India has Hardik Pandya, Australia has Stoneys, New Zealand has Mitchell, Afghanistan has Azmat, Pakistan has no one. Is fast bowling all-rounder a concern for Pakistan? Uzair, very very valid question. It's a big concern. मिसबा पिछले 1 महीने से ये कह रहा है कि
आपने फ़हीम को ट्राई करके देख लिया, आपने वसीम इज़ कमिंग अप टू इन एज, पिछले 3-4 मैचों में पेस बॉलिंग अच्छी की, उसके साथ थोड़ी उसकी बैटिंग भी होपफुली इंप्रूव हो जाए तो बेहतर है. आइडियल कैंडिडेट. देन अनदर गाय everybody is talking about is Amir Jamal. Amir Jamal apparently is batting at number 9 in first class cricket if he wants. That's where the communication is so important. NCA/High Performance Center जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट देखता है, जो भी इंचार्ज है PCB का, उसकी जो आगे टीम है वो ये चीज़ें फॉलो करेगी कि भाई ये लड़का फ्यूचर का पाकिस्तान खेलना है, इसको इस नंबर पे बैटिंग कराओ, इसको फिर उसको फॉलो करें. ये होता नहीं, यहाँ पे हम कह के फिर भूल जाते हैं. बट वेरी वैलिड क्वेश्चन. ऑलराइट. असदुल्ला बरोज ने आपके लिए मैं एडवाइस है, आस्क द पवेलियन फखर भाई प्लीज डू नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग एज देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ चोकिंग. थैंक यू वेरी मच फॉर माई कंसर्न और फॉर माई सेफ्टी. आइंदा मैं कभी कोई अखरोट या बादाम नहीं खाऊंगा शो के बीच में. नहीं रखो अब अपने पास. मुझे नहीं. एक उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा एक नाल तो मुंह नूल कुछ नहीं होना. Oh, I actually had one that got me into trouble. और मुझे उस वक्त बिस्किट का ख्याल आ गया कि जो वसीम ने कहा था कि बिस्किट के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए जब आप कमेंट्री कर रहे हो. आज उसका हमें जब तू खा रहा था मेरा दिल किया तेरे से पूछूं आज बिस्किट किथे है. गल सुन ऐसे आ जाओ वापस. विशाल जिंदाल आपका एक्स हैंडल है विशाल J03375. वसीम अकरम, with Venkade pitch assisting seamers early on in the innings, do you not think the semi-final clash is a 50-50 chance for India instead of walk in the park like league matches, with the New Zealand seam attack also doing well with the likes of Trent Bolt, etc. Vishal Jindal. The question was के बॉल मूव करते हैं वहाँ पर. करता है वेंकटे में, तो क्या ये हाँ कि ये वन साइडेड अफेयर नहीं है, तो 50-50 चांस नहीं दोनों टीमों का. It's a knockout game. It's a World Cup semi-final. It won't be one-sided. I think our New Zealand team is a good side. और compared to India, recent form देखिए इंडिया 9 मैच जीता है, but knockout मैच में on that particular day anything can happen. अगर न्यूजीलैंड बैटिंग फॉर इंस्टेंस फर्स्ट करके रन्स ऑन द बोर्ड डाल देती है, that's pressure. India is the best chasing side in the world, we know, but semi-final का pressure वो different होता है. अंसर खान, अंसर KH9588 आपका एक्स हैंडल है. अंसर खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. Although World Cup 2023 is over for Pakistan in 3 or 4 of their matches didn't bat for 50 overs, which caused their net run rate to fall down. They should consider this in their future ODI ICC tournaments to maintain NRR, net run rate. Gentlemen. अभी तो आपका पूरे साल में एंड में नवंबर में जाके वनडे है. सो दैट इज़ द बिग इशू कि आप तभी उठते हैं जब वर्ल्ड कप का साल होता है. मैंने पहले भी ये बात कही है कि आपको अपनी टीम डेवलप करनी है, और वो अभी से अगर आप डेवलप करना शुरू करेंगे, अपने प्लेयर्स को उसका एक्सपोजर देना शुरू करेंगे, तभी जाके वो सेटल डाउन होंगे. 4 साल में अगर आप पहला साल तो कोई वनडे ही नहीं है आपका, या जाके अगर हैं भी तो 1-2 वनडे हैं. तो इस तरीके से तो वर्ल्ड कप, नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक फिर वही होगा कि हमारे कई प्लेयर जैसे अब आपके सामने मिडिल ओवर में सऊद शकील पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में खेलना शुरू हुआ है. अब्दुल्ला शफीक जस्ट स्टार्ट प्लेइंग. तो इस तरह तो जब ऐसे होगा आप खेलेंगे ही नहीं, तो फिर यही सूरत हाल रहनी है. आप नेट रन रेट तो बड़ी बात की बात है कि उसके बारे में सोचना. क्रिकेट वाला आपका एक्स हैंडल है क्रिकेट हैश वाला, और आप कह रहे हैं while we debate about Babar team and coaching staff, doesn't it make sense to make PCB an independent body without the head of state as the patron in chief, which is the Prime Minister in Pakistan's case, run by a professional board and with independent budget and accountability? That would be ideal in an ideal world. Yes. Yeah. No political interference, and that would be the way to go in near future. In fact, sooner the better. The sooner that happens, the better. It's a great idea. Question में उन्होंने आंसर दे दिया. हाँ, खुद ही सवाल में जवाब दे दिया क्रिकेट वाला ने. Thank you very much for your questions. We are going to take a break, but when we come back, there's more on the other side. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and the ARY Zap app, and it's hashtag Pavilion time. That's going on right now. Ask the Pavilion. और जनाब, I have a question from Waleed Ayad, HYAYADH. उन्होंने पूछा what is the term Boxing Day Test match? Someone can elaborate. बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचेस जो क्रिसमस का अगला दिन होता है, जैसे हम कहते हैं ईद के बाद अगला दिन क्या होता है हमारा? दूसरा दिन होता है ईद का दूसरा दिन. There's a word for it.
टरू हाँ टरू मरू सिद्धा मैं पागल ना पुठा पंजाबी नहीं है टरू So Boxing Day is the next day of Christmas. All right. Okay. We have this question. Naman Verma. Naman Verma पूछ रहे हैं question for Wasim Akram. In your autobiography, you describe excelling despite turmoil. Your thoughts on Moin Khan were positive. Did the internal politics and infighting influence your performances positively or negatively? Okay, that's a deep question. It is. It is. You have to give a very good, honest answer here. All right, Judge Sahab. Order. अदालत में खामोशी So question ये था कि जब 90s में जो भी इंसिडेंट्स होते थे उससे क्या आपकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता था? That's what he meant. वो ये कह रहे हैं कि आपने अपनी किताब में लिखा है कि टर्मोइल के बावजूद भी आप एक्सेल कर रहे थे, एक्सेलिंग डिस्पाइट द टर्मोइल, और आपने मोइन खान का भी उसमें जिक्र किया, बड़े पॉजिटिवली उसमें किया, मगर बहुत ज़्यादा टीम के अंदर पॉलिटिक्स थी, इन फाइटिंग थी, इन फाइटिंग पे आपकी परफॉर्मेंस पे क्या असर हुआ था, मनफी या मुस्बित? I suppose it depends how you take it as an individual. Sometimes some people bow under that kind of pressure or politics in the team sport or any company, I suppose. मेरा opposite असर होता था. I think as a what you call it 25, 24-year-old, I always said, okay, if these guys doesn't want me to play cricket in a way, that's what I used to talk to myself. I'm going to make sure I perform that much कि मुझे कोई बाहर टीम से निकाल ना सके. So positive लिया मैंने इसको. All right, fair enough. सुहेब बशारत का सवाल आया. सुहेब बशारत _सुहेब आपका एक्स हैंडल है. आपने कहा just imagine a player manager is running our cricket team. Don't you think there should be a limit of managing the players by a single manager? Shoaib, let's take it to you. I don't think so because there are companies in America as well. No, but America is different. यहाँ he's asking in a different context as well. Yeah. I think Well, if it's not influencing अगर कोई rule नहीं बना हुआ तो there is no harm. but इसके ऊपर बना हुआ then there is no harm. Selection and all, then it's fine. Then it's Yeah, part it's of the fine. job. As long as it's not affecting our cricket, then it's okay. Okay. All right. मियां हसनैन जो है वो कह रहे हैं आपके बारे में, मिसबाह उल हक वो कह रहे हैं, मियां हसनैन, मियां 4071754 आपका एक्स हैंडल है. A strong middle order batsman in the team when he used to play for Pakistan, Misbah ul Haq. He had good sense of to play according to the situation. Otherwise, Pakistan could never win ODI matches during 2010 to 2015. After 2015, you have got Babar, Fakhar and many other talented players. ये in reference to जो आपका इंटरव्यू है, एक हमने जो किया था इंटरव्यू, उसके हवाले से वो कर रहे हैं. So he is actually crediting you and all that. But question is, sorry. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Appreciate that. और तुसी किसे नहीं खोर मेरे ती लोड पाई जाना है सारी. कोई भी नहीं देखता अपनी. Only Wasim is the only one who's actually. एक सेकंड मोइन भाई, मिसबाह भाई यार थोड़ा मोबाइल कर ले यार. बैटरी खत्म हो गई. No, it's there. I can see. बैटरी खत्म नहीं हो गई, खा गए होंगे. मेरी तेरी. Fair call. Okay. All right, we are searching for, I mean, there are a lot of questions, but I have to kind of vet them before I bring them on air. To Moin Khan, sir. Shankar N. आपका X handle है Shankar 55901. Shankar पूछ रहे हैं to Moin Khan, sir, I wanted to know from you how India have so many wicket-keeping options like KL Rahul, Ishan Kishan, Sanju Samson, Rishabh Pant, DK, etc., who are international ready after Mahendra Singh Dhoni. And why not so much from Pakistan? Are they only producing seamers? Not really. I think हमारे पास हैं कीपर मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में. नाम बताएं. दो मौजूद हैं. हारिस है, हारिस खेल रहे, और इस वक्त मिसबाह, इसका क्या नाम है जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी है यार हमारा, छोटा, Asib is a good wicket keeper. Okay. Yeah, Asibullah. He is a good wicket keeper. And even the young guy, Pakistan काफी junior cricket खेलता रहा है. Rohil Nazir, yeah. Rohil Nazir. He is a very good wicket keeper. Even he is a batsman also. Right. Very good batsman, yeah. महमूद इनका क्वेश्चन है,
हम सबसे Can India undefeated to find Cricket World Cup 23? I have shown regularly the Pavilion show. I'm a big fan of the Pavilion show. Thank you, Mahmood जी. वसीम क्या भाई. कह रहे हैं कि रेगुलर? हाँ, मतलब undefeated. Can India lift the trophy 2023 undefeated? It can happen. It can happen. They're only 2 matches away To from go, it. 2 matches away. Two games away. From that magic number. All right. The way they're Sayyid playing. Asad Naqvi, Asad Raza 110 आपका X handle है. Sayyid Asad Naqvi, salam to everyone. My question is for वसीम अकरम भाई, अगर आप इस वक्त खेल रहे होते तो विराट कोहली को कहां पर बॉलिंग करते? क्या स्ट्रेटजी होती है आपको विराट कोहली को बॉल करने के लिए? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. It is, but difficult to answer. I haven't played for 20 years, so I don't know. My bowling thinking is probably gone now. But when a player like Virat and हमारे era में थे ना greats of the games, from Steve Waugh to Mark Waugh to Taylor, then Tendulkar, Dravid and Ganguly, all these guys, Lakshman. Right. Then you go to the other countries, West Indies चले जाओ, Richie Richardson, you know all these greats. विराट कोहली को भी वैसे ही माइंडसेट होता मेरा जैसे कि इनके खिलाफ था कि यू नो ट्राई टू अटैक, कि अगर अटैक नहीं है तो फिर डिफेंड करो, अगर वो सेट हैं तो सिंगल दे दो, यू नो कुछ इस तरीके से करता. स्ट्रेट अवे कोशिश करते आउट होने की, करने की, यॉर्कर बाउंसर, अगर नहीं बैक ऑफ अ लेंथ फिर आ जाते. ऑलराइट. मोहम्मद अरसलान का सवाल है. मोहम्मद अरसलान, आपका एक्स हैंडल है 6ANA007. मोहम्मद अरसलान आप पूछ रहे हैं, आस्क द पेविलियन एंड आई विल टेक दिस क्वेश्चन टू यू मिसबा. व्हाट शुड बाबर आजम डू टू अवॉइड हिज डिसमिसल्स एट मिड विकेट रीजन, स्पेशली अगेंस्ट राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स? आई थिंक मलिक ने पूरा इस पे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया था कि उसको जब वो क्रॉस जाती है उसकी फ्रंट लेग थोड़ी सी तो क्रैम्प हो जाता है और फिर वो प्रॉपरली ऊपर नहीं मार पाता उस शॉट को, ना ग्राउंडेड शॉट होती है तो वो कैचेबल हाइट पे रहता है बॉल. तो आइदर ही शुड बी प्रैक्टिसिंग दैट, वो क्रॉस जाने के बजाय बैक लेग थोड़ी सी पीछे जाए ताकि उसको रूम मिले, थोड़ी एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स हो और उसी बॉल को ऊपर मार सके. फास्ट बॉलर का बॉल तो थोड़ा तेज आ गया और ऊंचा आ गया, बॉडी की तरफ आ गया, बट स्पिनर के लिए आप बता रहे हो कि दोनों के लिए? स्पिनर की ऑफ स्पिनर की बात की है उन्होंने. फास्ट बॉलर पे आई थिंक दैट इज हिज शॉट, नॉर्मली हिट सो मेनी बाउंड्रीज देयर. बट इम्पोर्टेंट ये है कि उस टाइम पे आप अगर फील्डर है तो कहीं ना कहीं आपको फिर ये देखना है कि मैं ये शॉट मार रहा हूँ कैचेबल हाइट पे, या तो मैं ऊपर से मारूँ पूरी ताकि वो बाउंड्री क्लियर करे, या फिर आप नीचे मारें उसको इन बिटवीन जो कैचेबल हाइट है. समटाइम्स बैड लक भी है कि आप मारते हैं वो शॉट और एग्जैक्टली वहाँ चली जाती है जहाँ फील्डर होता है. All right, with that we're going to take a break here on the Pavilion. When we come back, there's more on the other side. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. You're watching A Sports and Sports and the ARY Zap app, and we're wrapping up things here in the Pavilion right now. But I'm going to take one last question because this question comes from Hemant Butch, very well-known director, sports director, does a lot of broadcast work around the world for cricket. Abhi World Cup की पाकिस्तान इंग्लैंड की गेम भी डायरेक्ट कर रहे थे वो, and he sent us a one who started this. And and when जब हमने Pavilion शुरू किया था तो Hemant and Tojo were here supporting us to start the Pavilion. So Hemant Bush has asked this question to all of you guys because you're all former captains. Hemant says Babar Azam got a lot of leeway to pick his own squad. Could be a good thing, but do you think vesting too much authority in a captain can have its drawbacks too? And does it leave him open to more criticism? I want to hear it from you guys because you're 4 former captains. The first Hemant question, आपके question से question ये आता है कि खबर सच्ची है भी कि नहीं है, लीवे मिला भी है कि नहीं मिला, मिला भी है कि नहीं मिला. हमारे पास प्रूफ बैठा हुआ है. या एक्चुअली मिसबा सेट के मिला है. सो देन आई थिंक सिर्फ बाबर को नहीं आप पिन पॉइंट कर सकते कि बाबर ने ही सिर्फ सारा कुछ किया है. इक्वली आपका जो टीम डायरेक्टर भी था, टीम मैनेजमेंट थी, उनका भी मशवरा होगा. जाहिर है एक टीम मैनेज जो आपका थिंक टैंक है उनका मशवरा है, एंड सपोर्टेड बाय द सिलेक्शन कमेटी ऑल्सो. सो जो भी उस डिसीजन में इन्वॉल्व हैं बंदे, दे ऑल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. और वैसे भी ये सिलेक्शन कमेटी तो अभी बनी थी ना. जी बिल्कुल. उससे पहले तो टीम एकदम आके सारी टीम चेंज करना या नए लड़के लाने, ये भी तो इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हैं, डज ही हैव द विजन कि उसने टीम बनानी है, टीम लेके जानी है, यू नो.
वो चीज़ें भी तो चेक कौन करता है, वो चेक होनी चाहिए ना, क्योंकि कंटिन्यूसली हम देख रहे थे कि प्रॉब्लम आ रही थी बाबर की कप्तानी में एट टाइम्स व्हेन इट कम्स टू यानी पुटिंग प्रेशर ऑन द ओपोनेंट्स, वहाँ पे हमने देखा वो चीज़ चेंजिंग नहीं कर रहा था, यू नो, और वो कॉन्स्टेंटली एशिया कप में भी हमने देखा। तो दूसरा पार्ट जो उनके सवाल का वो ये कहता है कि जब आप इतना ज़्यादा लीवे दे देते हैं किसी कप्तान को, इतना फ्री हैंड दे देते हैं कि वो अपनी मर्जी करते हैं, तो क्या वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाता है फॉर क्रिटिसिज्म, कप्तान उसको ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है टुवर्ड्स इन दैट केस यस, यस सिंपल आंसर। ऐसा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम लर्निंग भी है। वो इसलिए है कि जब अगर आपने जो चीज़ें मांगी आपको मिली और उसके बाद परफॉर्मेंस होना नहीं होना दैट सेकेंडरी, बट जब नहीं हुआ तो टेक इट ऑन योर चिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक इट ऑन योर चिन और फिर चैलेंज लेके इसमें से सक्सेस लेके निकलना। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू वहीं पे है कि जब आप एक टीम होते हैं, पूरी जो आपकी सपोर्टिंग स्टाफ होता है, फिर डायरेक्टर भी है, फिर आपका हेड कोच है, आपका बॉलिंग कोच है, ये सब इनपुट देते हैं। जब टीम बनती है तो ऐसा नहीं होता कि एक बंदा कोई भी उठ के कहता कि ये टीम चाहिए कप्तान, क्योंकि वो सारे वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं उस टीम को, और उन सबको मतलब इस चीज़ को ऑन भी करना और इसका जवाब भी देना है। तो जहाँ पे भी उनको जिस आपके पास रिसोर्स की ज़रूरत है, आप उसके लिए ज़रूर कहते हैं कि भाई ये चीज़ हमें चाहिए, एंड दिस इज़ व्हाट दे हैव टू डू। आपको लगता है कि वो जो बॉलिंग कोच था या बैटिंग कोच था, वो सारे थे जो प्रॉब्लम्स थे जो आपने रेक्टिफाई किए, आपने किए, हफीज़ ने किए, आपने बताया ना उनको, तो आपको लगता है उनकी से इतनी थी कि वो उनको रोक सकते थे या टीम में ही रखवा सकते थे? नहीं हो सकता था। आई थिंक टीम डायरेक्टर तो है, नहीं टीम डायरेक्टर तो है ना आपके पास, और आपके हेड कोच हैं, तो दे हैव टू बेसिकली ऐसे। I think we pretty much get the answer, but this is a whole different discussion. I'm going to just interject here. But I hope, Hemant, you get a basic idea. Yes, if the captain has been given that much leeway, then he is responsible and then he is open to more criticism. That's, I think, the summary to your answer. And thank you for that. With that, आइए नजर डालते हैं कि what's up next. 2 semi-finals अब आप लोगों के लिए हम लेकर आएंगे. We've got the India versus New Zealand semi-final. ये 15 तारीख को आपकी खिदमत में पेश होगा मुंबई से बराह रास्त दोपहर 1:30 बजे. This will be the semi-final number 1, और फिर दूसरा semi-final will follow this the very next day on the 16th of November will be our second semi-final, and this will be from Kolkata, which is South Africa versus Australia. Both of these semi-finals promise to be outstanding and exceptional, and then of course on the 19th of November we have the final. We finally are going to get a break here in the Pavilion, which means we will not be in tomorrow. However, 14 तारीख की रात को, one night before the semi-final, we'll be here with a special edition to take a look at the journey of this World Cup. And with that, I'd say thank you guys. Thank you, Shoaib. Have a great days off. Thank you, Moin. Thank you, Misbah. Some rest, much deserved rest. And thank you, Skip. Thank you, buddy. Much deserved rest. Thank you so much for everything. And we have a special trip, the 5 of us out in the ocean. We'll tell you all about it when we come back in the Pavilion. Till then, take care of yourselves. Don't do anything naughty without me. And if you do it, make sure that you share it. With that, all I say is be kind to each other. Good night.